students, welcome to the biology class of StudyGist. Today we will start a new chapter and that is improvements in food resources. So in today's class, as the chapter is this the introductory class, the chapter will be introduced to you. So the topics which will be discussed, these are about sustainable agriculture. Firstly, we will have the idea about from where the agriculture came, right? The idea about agriculture, and then sustainable agriculture and integrated agriculture. These are two forms or two ways of doing agriculture. Nextly, we will know about the importance of organic farming, its advantages. Next, the type of crops and then crop seasons. And on the basis of seasons, how the crops are grown, what type of crops are grown, in which season or in which month, which type of crops are grown well. Like crop seasons, on the basis of that, these are of two types. Like we'll know about the kharif crops as well as the rabi crops. So this will be the introductory class. These topics will be discussed in detailed manner as it has been discussed so far. But before we start, I want to remind you about our social media platforms through which you can reach us. Firstly, I would like to tell you our YouTube channel, StudyGist Academy. This is our YouTube channel. Do subscribe our channel, like our Facebook page, join our Telegram channel as the link is provided here, and the name of the channel also you can see from there. You can watch, that is StudyGist School 7 to 10. It looks like this. Through this channel, each and every required updates of the live classes and the study materials of each and every subjects will be available before time. Follow us on Instagram and join us through the WhatsApp community, the WhatsApp group, through this number which is displayed on the screen. And for more updates, do visit our website www.studygist.in. Now in Google Play Store, our free app of StudyGist is available, and this app looks like this. When you will download it and it will be installed in your mobile, it will look like this. This is a very user friendly app, and through this app you know that the live classes are being conducted. Apart from the live classes, the recorded classes along with the study materials are also available through this app. So without any delay, download the app and install it now. Now this is how our YouTube channel looks like. So as I told you earlier, that subscribe our channel, and after that don't forget to hit the bell notification to hit the bell icon, so that whenever any new videos will be uploaded in our channel, you will be getting instant notification of that and can check out the video instantly. This is how our Facebook page looks like, and like us on Facebook too, as I told you earlier, and through this we can be connected continuously. So now without any further delay, let's move on to our topic. So firstly, we will discuss about the idea of agriculture. What is it about? What is about the improvement in food resources, right? So we know that all the living organisms around the world, they essentially require food. Food is our first need. फूड के बिना हम लोग बहुत कम समय तक ही सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि फूड की बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. फूड से हमें एनर्जी मिलती है, हमें पावर मिलती है, एंड विदाउट एनर्जी एंड पावर, without having the stamina, how long it can be possible for us to live, right? It's not. So early human being, they started hunting the animals and collecting the fruits. Means कहाँ से ये शुरू हुआ? फूड का जो नीड है, ये एग्रीकल्चर, ये जो फूड रिसोर्स है, इम्प्रूव करना इसको, ये कहाँ से शुरू होता है? द नीड ऑफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नीड ऑफ फूड. सो फूड का नीड जब शुरू हुआ था इन द अर्लियर एज, एट द प्रिमिटिव एज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, देन दे स्टार्टेड टू हंट द एनिमल्स फॉर ईटिंग. क्योंकि उन लोगों को मतलब ह्यूमन बींग्स कुड रियलाइज कि
इसको हंट करके हम लोग फ्लैश खा सकते हैं. दिस कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड. और ट्रीज से, प्लांट से, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड रूट्स, ये सब भी फॉरेस्ट प्लांट से ये सब भी कलेक्ट करके ये सब भी फूड के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल कर सकता है. फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट, फॉर द रिपेयरिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ये कोई एक जगह पर कट हो जाने के बाद ऐसा कभी नहीं होता है कि वो सालों साल ऐसा ही रहता है, महीने से महीने वैसा ही रहता है, वो ठीक हो जाता है, राइट. सो डेफिनेटली द worn out tissues of our body get repaired. It also protects the body from the diseases and provides energy for doing all type of life function. Okay. Now among all the living organisms, means irrespective of plants as well as animals I'm talking about, so only the green plants, they are very very vital, very very important. I'll tell you why. Because they are considered to be the autotrophs. This term we know from very junior level, right? Third standard, fourth standard, even before that also this idea is very much known to us. हम लोगों को ये मालूम है कि ग्रीन प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लोगों को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है. ऑटो मीन्स व्हाट? ऑटो मीन्स ओन or by itself. So that is, they can, why they are called so? Because they can make their own food, right? And green plants, they perform a basic metabolic activity that is known as photosynthesis. And in contrast to green plants, the animals and the human beings, animals as well as human beings, are the heterotrophs. Okay, they depend on the plants and other animals for their food. Okay, since then the human beings have been doing farming and also rearing of animals to meet their requirement of food. So तभी से, जब इसका importance मालूम भी नहीं था, तब से लेके human beings they started hunting. Now after that they started farming. जब उन लोगों को प्लांट्स के बारे में पता चला, प्लांट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला, then they started to do farming and for meeting their needs of food they started to rear or taking care of the animals also. Okay, because they understood that the source of food they can get from plants as well as from animals. Now the concept is coming like sustainable agriculture. So I told that this from there farming, the concept of agriculture came, right? Now this agriculture is various forms. So first type, this is the one type and very widely accepted type of agriculture, that is known as sustainable agriculture. So sustainable agriculture, if we go by the definition, it can be defined as the adoption of various farming and production management techniques to maximize the agricultural yield. So sustainable what comes from sustain. Sustain मतलब पकड़ के रखना, या for long means to keep something, to take care something, to maintain something for long run. Okay, long time, for the long times कुछ चीज़ों को मतलब that thing must be kept, must be taken care very well. So for the maximize for getting the maximum yield from the agricultural field, वेरियस फार्मिंग एंड प्रोडक्शन टेक्निक को अडॉप्ट करना, जिस एग्रीकल्चरल वे में, जिस पाथ में इसको एक्सेप्ट किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, दैट एग्रीकल्चर, दैट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राइट. नाउ फॉर इम्प्लीमेंटिंग सच प्रैक्टिसेस, क्या होगा इससे? वुड हेल्प इन फर्स्टली कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज, डेफिनेटली द नेचुरल रिसोर्सेज विल बी कंजर्व. सेकेंडली द मेंटेनेंस ऑफ द एनवायरमेंटल बैलेंस. अब ये नेचुरल रिसोर्सेज अगर कंजर्व रहेगा तो एनवायरमेंटल बैलेंस जो है दैट ऑल्सो विल बी kept up or maintained properly, right? And third point is very important, that is
cope up or adjusting with the changing human needs. So depending on that, because human need से ही जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी बनता है, और ये इकोनॉमी इज ऑल्सो वेरी मच क्लोजली रिलेटेड विद द वे ऑफ और द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राइट. सो ह्यूमन नीड्स जो है, ह्यूमन नीड्स के साथ कोप अप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, हेंस to assure sustained livelihood of Indian farmers and also the related person, it is very necessary to adopt the sustainable agricultural practices such as like mixed farming, crop rotation, intercropping, then integrated farming. These concepts are very new concepts, and for sustaining the agriculture for long, we need to develop, we need to adopt, we need to accept such agricultural practices like mixed farming, intercropping, then crop rotation, integrated farming, etc. Right? Now next we will move on to the integrated way of agriculture. It implies what? It implies a combination of agriculture with other forms of culture such as pisciculture. Pisciculture मतलब फिश को हम लोग कल्चर जिसमें करते हैं, मतलब जिस प्रोसेस पे करते हैं उसको, जिस इवेंट जिस प्रोसेस में करते हैं उस इवेंट को कहा जाता है, उस ऑकरेंस, उस इवेंट को कहा जाता है पिसिकल्चर. एंड देन एक्वाकल्चर, देन एपीकल्चर, कीपिंग ऑफ बीज, हनी बीज, दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर. देन सेरिकल्चर, सेरिकल्चर वी नो डीलिंग विद द सिल्क वॉर्म, सिल्क मॉथ, राइट, सिल्क वॉर्म कल्चर. देन पोल्ट्री फार्मिंग, पिगरी, livestock production, that is under the animal husbandry. These are all under the integrated agriculture. Integrated means सबको जोड़ के रखना. So see here integrated farm management, here also you will see everything, every field, animal husbandry, energy efficiency, then pollution control, everything, wildlife, landscape, marketing, organization and planning, soil management, fertility, crop protection, all these things are interrelated, and they are given equal importance to get success, to get a better yield, and जो भी चाहिए इसमें वो मैंने फाइनली उसमें सब कुछ उस तरह से बेस्ट वे में मिलना चाहिए. दिस इज द मेन मोटो और मेन गोल ऑफ इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर. ऑलराइट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. See, sustainable agriculture achieves the integration of natural biological cycles and also their controls. Next, it protects and renews the soil fertility. This is very important. Soil fertility, it is renewed, and the natural resource base. Next, it optimizes the management and also the use of farm resources. Nextly, it reduces the use of non-renewable resources and purchase production inputs. And lastly, it also provides an adequate or proper and dependable form of income. So these are the advantages of sustainable agriculture. Next is organic farming. So what is organic farming? Say, it is the practice of raising the crops or giving importance, or yes, raising the crops which have not been polluted with the use of manures, biofertilizers, and also biopesticides. So what is organic farming? It is a kind of practice farming in an organic way, right, in an organic way. So what is being done? Raising of crops which have not been polluted. क्रॉप्स को रेज करना है जो कि किसी तरह से मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, बायोफर्टिलाइजर्स या बायोपेस्टिसाइड से पॉल्यूटेड नहीं है, मतलब इन सब में से कुछ भी इसमें मिक्स नहीं किया गया है या अप्लाई नहीं किया गया है. इंस्टेड द हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम्स दैट प्रोवाइड ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स to the plants and keep the pest as well as the weeds under control, these are used. फुल्ली ऑर्गेनिक वे में कोई भी बाहर से ना ही मैन्योर, ना ही कोई फर्टिलाइज़र, ना ही कोई पेस्टिसाइड्स फॉर किलिंग द इंसेक्ट, दीज आर नॉट इवन यूज्ड.
और वो मिनिमम न्यूट्रिएंट्स ही रहेगा, मिनिमम न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करके जो फार्मिंग किया जाता है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, राइट। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस? It prevents the pollution of any component of our environment. First point. Secondly, the farm wastes are recycled. फार्म से जो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है उसको रिसाइकिल किया जाता है। उसको मतलब रिसाइकिल क्यों किया जाता है? ताकि वो वेस्ट फील्ड में ना चला जाए, उसको रीयूज़ किया जाए। उसका जो वेस्ट थिंग है उसको किसी तरह से एक रिसाइकलिंग प्रोसेस से उसको वहाँ से जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा सके, राइट। नेक्स्ट, द फूड्स ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर फ्री फ्रॉम द पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स। जो फूड ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी पेस्टिसाइड या टॉक्सिक मिनरल्स का थोड़ा सा भी पार्ट नहीं मिलेगा, कुछ परसेंटेज में यहाँ पर नहीं मिलेगा इसका प्रेजेंस, क्योंकि इसमें ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग द मैन्योर्स, बायोफर्टिलाइजर्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स were not at all used, right? Next, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेंटेन्स द सॉइल हेल्थ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से कुछ आर्टिफिशियली मिक्स नहीं किया जा रहा है, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि सॉइल का जो हेल्थ है, सॉइल का जो कंडीशन, दैट मीन्स सॉइल हेल्थ मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन से अबाउट द फर्टिलिटी और फर्टाइल एबिलिटी ऑफ द सॉइल इज प्रॉपरली मेंटेन्ड, राइट। एंड लास्ट वन is the cropping system of organic farming keeps the insects, pests as well as weeds under control or under check. This is also very important advantage of organic farming. Next we are moving on to the types of crops. Firstly, first type of crop is the seeds. Not all the seeds are edible, not all the seeds of plants are edible. Edible seeds means the cereals, द पल्सेस, दाल जो हम लोग खाते हैं, जो ग्रेन्स, सीरियल ग्रेन्स खाते हैं, या ऑयल सीड्स। नाउ द ड्राई फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ नट्स हम लोग खाते हैं, दोज आर अंडर द सीड्स, राइट। सो सीरियल्स में से कौन कौन सा, जैसे कि व्हीट है, फिर राइस है, मेज, बार्ली, सरगम, ये सब जो है वो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ये, और ये आता है अंडर द सीरियल सीड्स, ओके। नेक्स्ट पल्सेस, जैसे कि मैंने कहा सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो दाल होता है जो हम लोग चावल के साथ या फिर चपाती के साथ खाते हैं, दोज आर द पल्सेस एंड दे इंक्लूड द लेग्यूम्स सच एज लाइक द चिकपी जो होता है, ग्राम सीड्स जो चना होता है, फिर मटर या फिर पी सीड, देन ब्लैक चना, उड़द दाल जो हम लोग कहते हैं, फिर ग्रीन ग्राम जो मूंग दाल, that is pigeon pea, अरहर दाल, फिर cow pea, that's lobia, and lentil or the masoor dal. So different types of dal, as I said, these are the rich source of protein. So cereals are rich source of carbohydrates and pulses are the rich source of plant proteins. Okay, next are the oil seed crops. Oil seed में क्या रहता है? Cotton seed रहता है, niger seed रहता है, then it will be sunflower, okay, sunflower seed, soybean seed, flax और linseed oil कहा जाता है जहाँ से मिलता है, groundnut, sesame, mustard, olive. These are the examples, you know, these are the examples of different oil seeds, okay. Next we are going on to the nuts or the dry fruits. Nuts, we know these are the rich source of protein and fatty acids and very good fat, good amount of fat. Good amount of fat means there are two types of fat, good fats and bad fats. So good fats give us so much energy. So those type of fats in the form of fatty acid, these are present in the dry fruits. So these are considered as energetic food, or they are already considered as energy giving food, like the almonds, walnut, cashew nut, raisins, dried apricot, कोकोनट, पीनट, डेट्स, खजूर जिसको कहते हैं हम लोग, ये जो है ड्राइड फॉर्म में मिलता है. दीज आर नॉन अदर देन द ड्राई फ्रूट्स एंड समटाइम द नट्स आर ऑल्सो
there these are considered as the types of seed crops, right? Next category is the fruits. See, fruits, as many as name, you know, you can include that. Just I have included a few, just check it out. Apple, orange, mango, banana, pineapple, guava, papaya, watermelon, muskmelon, pomegranate, pear, peach, apricot, grapes, dates, custard apple. So these are several, you know, several fruits they have. They are the these are the basically what fruits are, we know these are the ripened ovary, right? Ripe form of ovary of the plants, and a good source of different kinds of various kinds of minerals, vitamins, roughage, proteins, carbohydrate, fats, all kinds of nutrients are present in various kinds of fruits. But if we say mostly the vitamins and minerals and also huge amount of roughage, these are present in these fruits. Okay, so moving on to the next category, that is the vegetables. So vegetables are the edible parts of herbaceous plants. जो herbs होते हैं, herbaceous plant जो है उनका जो edible जो part खाया जाता है, खा सकते हैं, those are the edible parts of the herbaceous plants, and they can be sometimes eaten as raw and sometimes they are eaten in the cooked form. Like if we say about the roots of some plants like carrot, ये तो हम लोग बहुत जूनियर क्लासेस से जानते हैं, राइट? लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप, बट हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं. सो जस्ट फॉर रिकैपिचुलेशन from your previous knowledge, from the knowledge from your previous classes, junior classes, I want to just give you a reminder like the carrot, radish, turnip, फिर जो आपका स्वीट पोटैटो होता है, बीट रूट्स होते हैं, ये जो हम लोग खाते हैं, ये बेसिकली दीज आर द प्लांट रूट्स, दीज आर इटन एज वेजिटेबल्स. ओके, नेक्स्ट आर स्टेम्स. स्टेम जो है जैसे कि मस्टर्ड, बैम्बू, बनाना, देन एस्पैरागस, ये भी वेजिटेबल जैसा यूज होता है, दीज आर द स्टेम. ओके, and also sometimes we will see that some underground stems are also there like potato. So you may be confused that potato and sweet, between potato and sweet potato. So remember again, the sweet potato is the root whereas potato is the underground stem. Okay, apart from potato there are some other underground stems also which is modified in such a way like onion bulb, ginger, garlic, ये सब सारे, और stems of sugar cane, these are also used for making the cane juice, and the jaggery. Jaggery means the गुड़ हम लोग खाते हैं, that is very good source of carbohydrate, right? Next, moving on to the leafy vegetables, they include the leaves of spinach like lettuce, cabbage, turnip, radish, radish का जो leaf part होता है, right? मस्टर्ड, मेथी, देन पिगवीड, करी लीफ, ये सब जो लीफी वेजिटेबल्स, जो लीव्स होता है, ये लीफ पार्ट को हम लोग खाते हैं. दीज आर द सीरियल्स हियर, राइट? नेक्स्ट इज इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर जैसा होता है, ग्रीन ग्रीन, राइट? कंप्लीटली ग्रीन, वी नो दैट एंड वी लव टू ईट. सो द ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर और ये सब इन्फ्लोरेसेंस एंड अदर जो जिसका ये दो इन्फ्लोरेसेंस हम लोग खाते हैं एज वेजिटेबल, और जिसका फ्लावर खाते हैं जैसे कि बनाना, फिनल, गॉर्ड, सैफ्रॉन. ओके, दीज आर द वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेबल्स जिसका हम लोग फ्लावर पार्ट जो होते हैं उसको हम लोग एज वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं. नेक्स्ट इज द फ्रूट वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो, pumpkin, brinjal, jackfruit, bitter gourd, bottle gourd, ridged gourd, cluster bean, cucumber, lady's finger, pumpkin, सीताफल जिसको कहते हैं, then capsicum, vegetable sponge like घिया तराई कहा जाता है, फराज बीन, ओके, tamarind, कारम्बोला. सो ये सब जो है वो फ्रूट वेजिटेबल्स है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, राइट? नेक्स्ट कैटेगरी इज द स्पाइसेस. सर्टन पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक लीव्स, किसी का लीव्स, किसी का स्टेम, देन फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स आर यूज्ड टू एनहांस the quality of food, not the quality, the taste of food, longevity of food, cooked food material.
So they include chili, turmeric, black pepper, cumin, fenugreek, cardamom, fennel, nutmeg, clovage, sesame, cinnamon, dried ginger और सौंठ जिसको कहते हैं. तो ये सब जो है वो स्पाइसेस के रूप में, स्पाइसेस के तौर पे यूज़ होता है. देन फॉडर क्रॉप्स. फॉडर क्रॉप्स क्या है? दे प्रोवाइड ग्रीन फॉडर टू द कैटल लाइक द बरसिम, ओट, सूदन ग्रास, सरगम, ये सब फॉडर प्रोवाइड करता है कैटल्स को. एंड लास्टली द अदर क्रॉप्स, द क्रॉप प्लांट्स ऑल्सो यील्ड फाइबर्स like cotton, the tobacco, टी, कॉफ़ी, चॉकलेट, पिपरमिंट. ये जो है ये कुछ अदर क्रॉप्स है जो ये सारे जो कैटेगरीज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इस कैटेगरी में से किन मतलब कोई भी कैटेगरी में फिट नहीं होता है. सो दीज आर कैटेगराइज्ड अंडर द अदर क्रॉप्स. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सीजनल क्रॉप्स. एज आई हैव टोल्ड यू while we have started this class that depending on the season, the growth of crop means the growth of crop depends on the season, different seasons, right? On the basis of that, crops are of two types. On the basis of growth, on the basis of seasons, crop seasons, these are of two types. First category is the kharif crops. So these are the crops which grow during the rainy season. Here we can see rainy season means June month to October month, September, October. This is the time where these type of crops grow. And they are also known as summer season crops. This is the summer time also. And the chief kharif crops, that's the cereals and the pulses. These are paddy, maize, millet, groundnut, soybean, arhar, black gram or urad ki dal, green gram or moong dal, cotton and jute. Vegetables of kharif crops are spinach, gourd, garlic, ladyfinger, pumpkin, brinjal. And if you go to the fruits, you will see watermelon, muskmelon, mango, lychee, plum and peach. These are the vegetables, fruits and the crops which are grown in the rainy season during the month of from June to September or October. So here you have seen in this picture also rice is there, maize is there, millets are there. Apart from that, if you are asked to name some fruits and vegetables grown in the kharif season, I think now it's very easier for you to answer that. Okay, so lastly we will move on to the next type, that is the rabi crops. These crops, they grow just in the winter season. That means from the November, as this is starting now, from November to April. And the rabi crops are also called as winter crops because they are grown in the winter season only. And the important rabi crops, that's the mainly cereal and pulses. If we talk about that, first comes the wheat, barley, gram, mustard, pea and linseeds. And if we talk about the vegetables of rabi crops, like it will be cabbage, cauliflower. Winters में बहुत सारे vegetables मिलते हैं जैसे कि अभी cabbage, cauliflower, carrot, radish, turnip, beans, ये होता है. And if we talk about the fruits, in summer we get mango, but in winter we mostly get apple, pomegranate, orange. Apple, orange तो बहुत ज़्यादा मिलता है, right? So these are under the rabi crops. So for this was the concluding class today. I have told you. So in the next class, the rest of the topics after that, after the crop season, these topics will be discussed. Till then, read the chapter, take care of yourself, and thank you so much.